Hello everyone, welcome to LUKMAAN IAS. Today we are going to have the Hindu analysis of 11th September 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper and take input for our examination one by one. Let us see. First article on page number 6, editorial page. So the context of the article, it is talking about the agriculture-led revival of Indian economy. So in first part, it is giving the recent reforms in the agriculture sector by the government, and then it is analyzing whether these reforms are sufficient for agricultural growth in India. ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि which are the four arguments that are offered in favor of such revival. First is that the procurement of Indian, let's say India's food grain production. First of all, it is talking about the production and then procurement. So it is 3.7% higher than the previous year. Okay, the production and the procurement of Rabi wheat in this year was 12.6% higher than the previous year. So these are some important arguments that are given in favor of agricultural led revival of Indian economy. So first it is talking about the bumper production, especially the procurement in Rabi season of wheat. ठीक है. Second, it is talking about the higher food inflation, especially in rural areas as compared to previous year, and because of that, it is presumed that there is higher demand in the food grains. ठीक है. तो क्या है food inflation? 9.2% higher than the previous year due to sustained demand for food. ऐसा बोला गया है. Okay, we will analyze all these arguments in detail in the second part. First of all, let us see the third argument then. The area under the Kharif crop sowing in this season 2021 was 14% higher than the previous year. तो हमने ये recently पढ़ा भी है कि इस बार ज़्यादा एरिया जो है सोइंग के अंडर आया हुआ है खरीफ क्रॉप के, so खरीफ सीजन में. So we can understand that 14% higher than the previous year. At the same time, this is accompanied by higher tractor and fertilizer sales. So we can understand that yes, the agricultural sector is going to have bumper production this year also. So government's economic package for agriculture, yes. So this was the Atmanirbhar Bharat package, and the main component of this Atmanirbhar Bharat package was targeted towards the agriculture sector also. Fine. So that will, let's say, provide the engine for revival for agriculture sector now. Now the article is in the second part, it is analyzing these arguments critically. ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि these are not sufficient arguments and these will not lead to agricultural growth, or we can say that these are flawed arguments. ठीक है, तो वो कैसे, अभी यहाँ पे आपको कुछ facts और supporting arguments मिलेंगे. For example, जो पहला था procurement से related, as per official data, only 13.5% of paddy farmers and 16.2% of wheat farmers in India sell their harvest as a procurement agency at assured MSP, while rest sold their output at, let's say, in the market below MSP. Now this is the problem here. ठीक है, कि जो procurement हुआ है वो तो हुआ है market में, that is fine. However, the farmers sold this, let's say, their production or food grains in the market lower than MSP. तो ये farmer को कुछ फायदा नहीं हुआ है उसका. ठीक है. The most important problem faced by the farmers during lockdown was loss of market stemming from the disruption of supply chains, closure of mandis and fall in consumer food demand. जो लॉकडाउन में हुआ 3-4 महीने के लिए. ठीक है, तो ये फार्मर्स सफर्ड मेजर लॉस ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ दैट. सेकंड एस्पेक्ट, इट इज ऑफ, लेट्स से, इन्फ्लेशन. पहला तो प्रोक्योरमेंट का आपको समझ गया कि कैसे ये फ्लॉड आर्गुमेंट है, फार्मर्स को कुछ फायदा नहीं हुआ उससे. सेकंड, इन्फ्लेशन रेट्स एस्टिमेट यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस CPI आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स प्राइसेस. ठीक है, तो वो मार्केट प्राइसेस जो होती है वहाँ पे उसका इंडिकेशन होता है. फार्मर किस प्राइस पे सेल करता है मार्केट में वो इंडिकेशन नहीं होता है. ठीक है. सो इन्फ्लेशन वाज लार्जली ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स एंड राइज इन ट्रेडर मार्जिन. तो वो बीच का मिडलमैन जो होते हैं ट्रेडर्स, उन्होंने जो स्टीप हाइक किया हुआ रहता है उनका, हम बोलते हैं मार्जिन, वो वहाँ से कट करते हैं और देन दे सेल दैट टू द रिटेल
सेक्टर, ठीक है, एज रिटेल मार्केट में जो सेल करते हैं, तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन है, रादर देन वो फार्मर्स को उसका रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट, हायर खरीफ सोइंग सीजन, ये जो 14% बोल रहे हैं कि बढ़ गया है, तो वो बढ़ क्यों गया है वो भी आप देख सकते हैं। गिवन दैट द रबी इनकम्स फेल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मेनी रूरल हाउसहोल्ड्स मे हैव रिटर्न टू फार्मिंग्स एंड इंटेंसिफाइड फार्मिंग फॉर फूड एंड इनकम सिक्योरिटी। तो इंटेंसिफाइड फार्मिंग हो रही है बिकॉज द रबी क्रॉप्स, उनकी वजह से जो इनकम आना चाहिए था वो सही से नहीं आया है। एट द सेम टाइम लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न टू देयर विलेजेस। वी न्यू in the lockdown period what happened is reverse migration from urban areas to rural areas, and because of that what happened is these lakhs of migrants are now reaching to rural areas, उनके होम टाउन विलेजेस पे चले गए और वहाँ पे जाके वो क्या काम करेंगे, उनके फार्म पे काम करेंगे अभी, ठीक है। तो खरीफ सीजन में हम देखते हैं कि वो सारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे, एंड दे मे हैव टेकन द एग्रीकल्चर इन प्रीवियसली फैलो और अनकल्टिवेटेड लैंड्स। जो फैलो लैंड होगा वो अभी कल्टीवेशन में आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस लेबर एट वर्क इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, रादर दिस इज द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, ठीक है, कि ये अर्बन एरियाज से जो लेबर है वो रूरल एरियाज में जाके वहाँ पे काम कर रहा है। सो वी कैन से दैट ये तो एक टेम्पररी बात हो गई, बाद में जब सब सही हो जाएगा फिर से ये लेबर अर्बन एरियाज में आ जाएगा, फाइन। And lastly the package, the total fresh spending for agriculture in the package is a trickle less than 5000 crore, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है और उसमें जो है इतना ही डायरेक्टली एग्रीकल्चर को जाएगा, रेस्ट आर द स्कीम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द पास्ट बजट्स, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस स्कीम होती है या लोन्स होते हैं तो उसके थ्रू जो है बैंक्स के लोन्स, प्रायोरिटी सेक्टर एंड ऑल, तो उसके थ्रू जाएगा। बाकी डायरेक्ट जो पैकेज है 5000 करोड़ का ही है, जैसे पीएम किसान स्कीम के थ्रू डायरेक्ट 6000 जो है फार्मर के अकाउंट में जो चले गए हैं, सो वैसे ये पैकेज के अंडर है। लिमिटेड इम्पैक्ट इट इज हैविंग, सो दैट द आर्टिकल इज टॉकिंग रादर इन द कंक्लूजन द आर्टिकल इज सेइंग दैट द गवर्नमेंट शुड डिस्कार्ड रोल ऑफ पैसिव ऑब्जर्वर एंड डिसिसिवली इंटरवीन इन रूरल इंडिया विद द सब्सटेंशियल फिस्कल स्टिमुलस। Okay, so then only the agriculture will act as a, let's say, agent of revival in Indian economy, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर लेड रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल अनलेस द गवर्नमेंट इंटरवीन इन रूरल इंडिया विद सब्सटेंशियल फिस्कल स्टिमुलस, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो ये पहले आप आर्गुमेंट लिख सकते हैं कि क्यों बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर लेड रिवाइवल हो सकता है, और आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है बाद में उस आर्गुमेंट्स को, फाइन, यस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर met with Chinese counterpart along the, let's say, sidelines of SCO foreign minister meeting in Russia, Moscow। तो ये जो मीटिंग हुई है, दिस इज, लेट्स से, टू डिस्कस वॉट एवर द स्टैंड ऑफ दैट इज गोइंग ऑन इन रिसेंट मंथ्स अलोंग द LAC इन लद्दाख। तो इसके मीटिंग्स के अभी तक डिटेल्स हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे चल के, कल परसों में इसके डिटेल्स आएंगे। हाउएवर we can talk about that the meeting took place after completion of SCO Council's foreign minister meeting as well as RIC trilateral meeting of both ministers that have attended. However, the outcome of India-China bilateral meeting was not immediately known, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा। At the same time, our minister who travelled to Russia attended 8-nation Shanghai SCO also held bilateral meetings with foreign ministers of other, let's say, members of SCO, ठीक है। तो जैसे कि किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, तो इनके साथ भी उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स लिए एक्सेप्ट पाकिस्तान। नाउ वी नीड टू नो अबाउट SCO, सो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, सो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स पर्पस। सो प्रायर टू दिस क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001 देयर वाज, लेट्स से, ग्रुपिंग कॉल्ड एज शंघाई 5। तो वो कौन थे? शंघाई 5 मतलब एक तो चाइना होगा
और दूसरे 4 जो थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड देन रशिया एंड ताजिकिस्तान। तो ये हम बोल सकते हैं शंघाई 5 थे, ठीक है। बेसिकली दिस ग्रुपिंग वाज फॉर्म टू डेलिबरेट ऑन लेट्स से और डिस्कस्ड ऑन बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स along with these 4 former Soviet republics with China। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो शंघाई 5 हो। And then after with the accession of Uzbekistan to this organization in 2001, the naming was changed to SCO। Now the mandate was let's say expanded through let's say now this is the European political, economic and military organization। सो लेट्स से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जनरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ लेट्स से यूनिक काइंड जिसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, मिलिट्री एस्पेक्ट्स और लेट्स से सिक्योरिटी एस्पेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इन 2017 इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ SCO, ठीक है, दोनों को एक साथ में ही मेंबरशिप दी गई है। नाउ एट प्रेजेंट देर आर 8 मेंबर्स, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan। So these are the 8 members। Secretariat of SCO is at Beijing। Official languages Russian and Chinese। So basic information for prelims purpose, this is important let's say information, fine, yes। So moving on to next article, House can select deputy speaker। So this is in news at present because since let's say the new Lok Sabha was appointed since 2019, let's say came into the power, the new government, there was no election to the deputy speaker position, ठीक है। तो वो अपोजिशन जो है सब्सटेंशियल अपोजिशन नहीं है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वेंशन दिस पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू और ऑफर्ड टू अपोजिशन पार्टी इन इंडिया। तो अपोजिशन पार्टी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अब तक उसका इलेक्शन हुआ ही नहीं है। नाउ एट प्रेजेंट द कांग्रेस इज प्रेसिंग फॉर दिस पोजीशन, तो अभी अपोजिशन पार्टीज के साथ में मीटिंग हो रहा है और ये एक्चुअली इलेक्शन होना चाहिए ऐसा उनका मानना है। So for prelims purpose we need to know some basic information like article 93 in the constitution provides for election of both speaker and deputy speaker। He acts as a presiding officer in case of leave or absence caused by death or illness of speaker of Lok Sabha। आपको समझ में आ रहा है, leave और absence caused by death or illness of speaker, तो रेजिग्नेशन के या फिर रिमूवल के बाद वो डेप्यूटी स्पीकर नहीं बैठ सकता है उसकी पोजीशन में, प्रिसाइड नहीं कर सकता। फाइन, यूजुअली द डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर जनरल इलेक्शन, बट इट इज वैकेंट सिंस लास्ट 15 months एट प्रेजेंट। ओके, बाय कन्वेंशन द पोजीशन इज गिवन टू अपोजिशन पार्टी इन इंडिया। द डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। जो इलेक्शन होता है डेप्यूटी स्पीकर का, उसकी डेट जो है स्पीकर फिक्स करता है। दिस डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नाउ दिस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू नो। ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ठीक है, तो उनको स्पीकर को अकाउंटेबल नहीं है, रादर ही इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू लोकसभा बिकॉज इट इज ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यस, करेक्ट स्टेटमेंट। द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, यस। एंड द थर्ड, डेप्यूटी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। सो अभी हमने देखा इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 1 and 2 only। Fine, yes। So next article, opposition grows in Tripura to large scale brew refugee enclaves। तो ब्रू रिफ्यूजीज कौन है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हैज़ बिन इन न्यूज़ सिंस लास्ट 2 years। तो ब्रू रिफ्यूजीज कौन होते हैं, उनको रियांग भी बोला जाता है, रियांग कम्युनिटी। इट इज़ इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। नाउ दे आर इंटरनल रिफ्यूजीज। इंटरनल रिफ्यूजीज मतलब हमारे कंट्री में ही डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो कैसे डिस्प्लेस हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ एथनिक क्लासेस दे आर ओरिजिनली फ्रॉम मिजोरम, ठीक है।
तो मिजोरम में पहले रहते थे ये 40,000 ब्रूज आफ्टर एथनिक क्लासेस इन 1997 दे फ्लेड टू डिफरेंट लोकेशंस, त्रिपुरा, आसाम, वहाँ पे चले गए हैं, एंड नाउ दे आर लार्जली लोकेटेड इन त्रिपुरा इन रिलीफ कैंप्स. Since then, only 5,000 of them returned to Mizoram in 8 phases of repatriation. 35,000 still are there in relief camps of Tripura. ठीक है, तो quadripartite agreement was signed in January 2020 between central government and governments of Mizoram and Tripura and leaders of Bru. ये चारों में जो है quadripartite हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट हुआ था टू लेट द रिमेनिंग 35,000 रिफ्यूजीज हु हैव स्टेड बैक टू बी रीसेटल्ड इन त्रिपुरा इटसेल्फ. तो उनको रीपैट्रिएट नहीं करना है, तो रादर त्रिपुरा में सेटल करना है. एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज ऑफर्ड इंक्लूडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 4 लाख रुपीज एंड लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर ईच फैमिली. So this is let's say package, rehabilitation package to Bru families or community to be resettled in Tripura itself. तो repatriation नहीं होगा because मिजोरम में जो है फिर से उनको डर लगता है, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है कि वापस से फिर से एथनिक क्लैशेस हो सकते हैं. फाइन, सो यस वी नीड टू नो अबाउट देम. यस, सो फॉर प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए. Yes, which of the following communities can be considered as internal refugees within India? So ये जो ब्रूज है वो है तो चकमाज एंड होजांग जो है दे लेट्स से came from Chittagong hills from earlier or we can say erstwhile ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश में है. ठीक है, तो वहाँ पे एक डैम बांधा गया था उसकी वजह से, और हम बोल सकते हैं कम्युनल क्लैशेस की वजह से भी उनको जो है वो डिस्प्लेस होके अभी अरुणाचल प्रदेश में दे आर रीसेटल्ड. सो ये भी न्यूज़ में रहता है. ठीक है, बट दे आर एक्सटर्नल रिफ्यूजीज, दे आर नॉट लेट्स से फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम चित्तगोंग हिल्स इन बांग्लादेश जो अभी राइट नाउ है. वहाँ से वो 1960s में इंडिया में आ चुके हैं, चकमाज एंड हैजोंग्स. फाइन, सो ब्रूज जो है वो इंटरनल रिफ्यूजीज. So this is the basic information. Next article, India Japan sign logistic agreement. Yes, international relations development between India and Japan. Agreement is agreement on reciprocal provision of supplies and services. So reciprocal provision of supplies and services, it is talking about let's say bilateral agreement. जब भी दोनों forces में, armed forces में जो हम बोल सकते हैं when they are engaged in bilateral training activities or peacekeeping operations, humanitarian relief and other mutually agreed activities. In those activities, both armed forces will have let's say reciprocal supplies and services of all the arms and ammunitions and services, communication services, all these things will happen between India and Japan armed forces. Largely this is going to help Indian Navy. ठीक है, क्योंकि जापान और इंडियन नेवी में दोनों में काफ़ी कोऑपरेशन है, तो उन्हें वो हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो आपको ये डेवलपमेंट इंडिया जापान के रिलेटेड पता होना चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस. नेक्स्ट, इन जनरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. फॉरेस्ट फायर कैलिफोर्निया में हर साल, एक्चुअली दिस इज द एनुअल फेनोमेनन, बट रिसेंटली दिस इज लेट्स से फॉरेस्ट फायर्स आर हैपनिंग एट वेरी फास्ट रेट. California. Okay, so fire burning California Sierra National Forest exploded in size, trapping hundreds of Labor Day holiday campers. ठीक है, तो वहाँ पे जो है लेबर डे का हॉलीडे होता है, तो बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट में कैंप्स लेके जाते हैं वहाँ पे वो ट्रैप हो गए बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट फायर. Experts agreed that reasons for extreme forest fire behavior driven by drought and warming temperatures that they attribute to climate change. So you can give the example of let's say impact of climate change, and one of them is forest fires. The best examples was bushfire in Australia last year. ठीक है, तो ये काफ़ी important aspect है climate change and its impact. The warming temperatures in Australia, the changing let's say temperature conditions throughout the world because of climate change phenomenon. So among the most concerning development is that fast moving wildfires leave less time for warning and evacuation.
तो ये अभी इस बार जो है फास्ट मूविंग, एक ही दिन में ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स का एरिया जो है वो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो चुका है वहाँ पे. सो दिस इज अगेन द कॉज ऑफ कंसर्न, न्यू phenomenon we can talk about. Fine. So you can take it as a, let's say, case study or example whenever we talk about environment related or climate change related topic. आपको essay आता है तो आप essay में mention कीजिए, GS3 में आपको environment topic है वहाँ पे mention कीजिए, और those which are having geography optional subject, especially case study, उनके लिए काफ़ी important है. Fine. So these were the important articles from today's The Hindu newspaper. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these mains related articles is done by Ansari Sir and team, you can contact LUKMAAN IAS. Thank you.